हेलो स्टूडेंट आज ਅਸੀਂ स्टार्ट करांगे टॉपिक डिफरेंशिएशन मीन्स बेसिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज रेट चेंज at a particular instant means rate change. For example if you drive a बाइक ड्रॉ करोगे, जो एक्सीलेटर दोगे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट रेट चेंज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट जिस टाइम स्पीड जो चेंज होगी मींस एट पर्टिकुलर टाइम एट 59 सेकेंड 60 20 सेकेंड किसी भी पर्टिकुलर सेकेंड के ऊपर जो रेट चेंज आएगा, रेट चेंज, दिस टर्म इज नोन एज डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू जनरल मीनिंग dy by dx. General meaning is rate change at a particular instant. Normally find out करोगे with respect to time, that is dy by dt with respect to time, rate change with respect to time. Rate change means change of any term. Change of any term is known as dy by dx. Change of any term, like for example cost change at a particular instant means if you buy 3 products and then you buy 4 products, for 3 products your cost is 100 rupees, for 4 products your cost is 103 rupees, then change between 3 to 4, this is a rate change. This term is a rate change at a particular term. जो change आएगा इस चीज को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन. This term is known as differentiation. In another method, in geometrical method, differentiation meaning. In geometrical meaning, differentiation meaning is slope of tangent. कोई भी curve है, means कोई curve है like this. इससे बैक के ऊपर अगर tangent draw करोगे, this tangent is known as slope of this tangent. Slope of tangent is known as dy by dx. Slope of tangent, slope is known as dy by dx. This is the geometrical meaning of slope. dy by dx geometrical meaning is known as slope. Now, for basic terms, for mathematical use, firstly learn करोगे कुछ basic formulas. The first basic formula is differentiation of x raised to power n. First formula is differentiation of x raised to power n, and this formula is n x raised to power n minus. Differentiation of x raised to power n is n x raised to power n minus 1. This is the differentiation of x raised to power n. N is any constant number. Now, differentiation of basic question. If y is equal to x raised to power 5, then find dy by dx. Its differentiation is dy by dx. Its differentiation is 5x raised to power 5x raised to power 4. 5x raised to power 4 is the differentiation. 5x raised to power 4. Similarly, if we have y is equal to 1 by x cube, 1 by x cube डिनोमिनेटर टर्म है, पावर शिफ्ट हो जाएगी ऊपर. देखो नीचे पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर शिफ्ट होके पावर -3 हो जाएगी. नाउ इट्स डिफरेंशिएशन इज dy by dx. डिफरेंशिएशन करो -3x raised to power -3 minus 1. By using this formula, -3x raised to power -3 minus 1. This term is -3x raised to power -4. Now this term is equal to -3 whole divided by x raised to power 4. -3 whole divided by x. This is your final. Clear atom? Now, differentiation, basic terms. Differentiation of root x. Differentiation of root x, like डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स. अगर टर्म आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स मींस पावर ऑफ रूट इज
It means this term is written as x raised to power 1 upon 2. Value बोलो 1 by 2 x raised to power 1 by 2 minus 1. 1 by 2 minus 1. Then this term is x raised to power 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2. Minus 1 by 2. Now न्यूमिनेटर पॉजिटिव टर्म है, शिफ्ट करोगे डिनोमिनेटर टर्म की बचेगी 1 by 2 x पावर 1 by 2. न्यूमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर लेके जाओगे 1 upon x by 2 हो जाएगा. दिस टर्म इज 2 upon root x. This term is 2 by root x is your denominator. 2 by root x. This is the differentiation of root x. Normally है, कंप्लीट सॉल्व भी कर पाओगे और डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला लर्न करो. डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला लर्न करो. डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला लर्न करो. 1 upon 2 root x. 1 upon 2 root x. Similarly, its power is 1. शिफ्ट करोगे 1 x पावर 0. देन फाइनल आंसर आ जाएगा 1. डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1. डिफरेंशिएशन ऑफ x minus 1 by x square is the differentiation करोगे x 1 shift करोगे x power minus 1 then differentiation. This is minus 1 x raised to power minus 1 that is x square हो जाएगा. Similarly, its differentiation is differentiation of x power 1. This is 1 x power 0. X power 0 is 1. 1. Differentiation of x is also 1. Differentiation of constant number 2, 3, 5. कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसकी डिफरेंशिएशन हर बार की आएगी 0. These are basic terms. Differentiation of root x 1 by 2 root x. Differentiation of x 1 by x minus 1 by x square. And differentiation of constant term is 0. कोई doubt? Now, बहुत basic terms. अगर प्लस एंड माइनस टर्म्स आए, डिफरेंशिएशन ऑफ f प्लस माइनस g. डबल टर्म है, सेपरेट करो, डिफरेंशिएशन करो. Separate means differentiation of f separate and differentiation of g separate. For plus and minus both terms. Like basic चीज आ जाए, differentiation of x cube plus differentiation of 5. Differentiation करोगे separate differentiation means first term separate differentiation plus second term separate differentiation. Differentiation of x cube is differentiation of x cube 3x square. Similarly, differentiation of constant term 5 is 0. Answer is 3x square. This is your final term. Differentiation is 3x square. This is your final term. अगर डबल टर्म है सेपरेट करो एंड आंसर हो जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट? नाउ देखो नेक्स्ट टर्म. इफ वी हैव कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई विद फंक्शन. नॉर्मली सिंगल कांस्टेंट टर्म आएगी, डिफरेंशिएशन किस दे को आएगी? फॉर सिंगल कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन इज 0. बट इफ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई विद द फंक्शन है, डिफरेंशिएशन किस तरह? इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट dy by dx k into d by dx of f. कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, ओनली फंक्शन टर्म डिफरेंशिएशन. डिफरेंस देखना बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ ओनली कांस्टेंट टर्म है 0, बट डिफरेंशिएशन विद द कांस्टेंट नंबर विद एनी फंक्शन है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, डिफरेंशिएशन हो जाएगी. नाउ इन दिस केस y is equal to 5x cube. डिफरेंशिएशन करो dy by dx. 5 मल्टीप्लाई विद फंक्शन है, 5 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म. differentiation of constant term. Now differentiation of x cube is 3x square and differentiation of constant number is 0. Differentiation of constant number is 0. This term is 15x square. This term is 15x square. This term is known as 15x square. Without which now next term
बेसिक क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू दिस टर्म डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d बाय dx। इफ y इज इक्वल टू दिस नंबर है 2 रूट x प्लस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ x, बेसिक टर्म dy बाय dx 1/3 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब। नाउ 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। 5 टर्म बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर, देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर बचेगी टर्म x पावर -2, x पावर -2 क्यूब। Differentiation of x cube is 3x square. Differentiation of root x is 1 by 2 root x. Differentiation of root x is 1 by 2 root x plus 5. Differentiation of x power -2 is -2 x power -2 -1, that is x power -3. Now this term is equal to, कुछ कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 5 into 2 10, that means final answer is dy by dx x square minus 1 by root x minus 10 upon x cube. This term is your final answer. 10 by x cube is your final answer. X square minus 1 by root x minus 10 by x cube is your final answer. Basic terms है, normal polynomial differentiation by using the formula differentiation of x power n. Up to this step teach किया है by using the formula this term. Now कुछ trigonometric differentiations, trigonometrical term differentiations. Differentiation of sin x, differentiation of sin x is cos x. Differentiation of sin x cos हो जाएगा. Differentiation of cos x minus sin x. Differentiation of cos x is minus sin x. Differentiation of tan x. Differentiation of tan x is secant square x. Now differentiation of cot x minus cosecant square x. Differentiation of secant x. Secant x into tan x. And last term, differentiation of cosecant x. This is minus cosecant x into cot x. Cosecant x into cot x. These are basic differentiation, trigonometrical differentiations. Important term करना. For cos term, if differentiation of cos c, for cot term c, and for cosecant term c, if these for C terms answers always negative. अगर क्वेश्चन C फॉर्म है then answer is always negative. मतलब cos, cot, cosecant terms negative है, otherwise positive. Now these are differentiation answer. Differentiation of sin x, cos x minus sin x, tan x, secant square x, cot x minus cosecant square x, secant x, tan x, cosecant x minus cosecant x, cot x. Now by use of these formulas, बेसिक क्वेश्चन कुछ इस तरह क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस c होल डिवाइडेड बाय sin. बिल्कुल बाय बेसिक मेथड करोगे, ओनली सेपरेट करो टर्म्स. अगर डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है सेपरेट, अगर डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है सेपरेट करो. b sin x अपॉन sin प्लस c by sin, c by sin, cos upon sin, बोलो बच्चों, cos upon sin is cot x, cos upon sin is cot x, sin cancel, only constant number बचेगा b, plus c, 1 upon sin is cosecant x, 1 upon sin is cosecant x. Now differentiate करो separate terms.
ए कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट। सिंगल कांस्टेंट नंबर है, डिफरेंशिएशन ऑफ बी मतलब कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। सी बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स बोलोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट सी है, दैट मींस नेगेटिव आंसर, माइनस ए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। कांस्टेंट टर्म बी, कांस्टेंट टर्म है बी, डिफरेंशिएशन 0, कोसेकेंट है माइनस साइन, सी है माइनस सी कोसेकेंट एक्स इनटू कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स इनटू कॉट एक्स। These are differentiations. dy by these are dy by dx. Differentiation. Minus a cosecant square x minus c cosecant x cot x is your final answer. Cosecant x cot x your final answer. कोई डाउट कुछ? Now, basic question है, clear है. The next term, कुछ basic differentiation for logarithmic and exponential terms. Differentiation of e raised to power x. Exponential, exponential term the differentiation आ जाएगी exponential. कोई change. E actually E proper value है, value of E is 2.71 something. It is a rational, irrational number. Like pi is irrational. But if any other number आ जाए a raised to power x, then its differentiation is a raised to power x into log a with the base. Now, it means if differentiation of 3 raised to power x, it means its answer is 3 raised to power x into ln 3b लिख सकते, log base e मतलब ln. Similarly, differentiation of this part, meaning of this term is base e means ln x भी लिख पाओगे, this is the same thing, log x with the base e or ln x is the same term. Now, differentiation of ln x or log x with the base is 1 upon x. कुछ any other base आ जाए, a base हो जाएगा, then answer is 1 by x into log a. 1 by x into log. Clear है term? This is differentiation of exponential and logarithmic function. Differentiation of exponential and logarithmic functions. Now, कुछ basic questions with basic properties of log. Y is equal to log x with the base 3 है, 3 log x to the base e and differentiation of 2 tan x. Simple question, differentiation करो, dy by dx. First term आ जाएगी differentiation of log x with the base 3. 3 means with base a. Second term 3 बाहर आ जाएगा, differentiation of log x to the base e. It means it is a ln x. This term is ln x. Now, difference 2 बाहर, differentiation of tan x. 2 बाहर, differentiation of tan x. इस term का मतलब क्या है? Log x with the base e 3, 1 by x into log 3 plus 3 simple log of x value 1 by x and simple tan the differentiation secant square x. Simple tan term differentiation is secant square x. This is your final answer. This term is your final. कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट स्टेप चेक करो. क्लियर है क्वेश्चन? बस जस्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे, बाकी कोई भी चीज मुश्किल नहीं. कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लॉग डिस्कस करांगा जो कि मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड. बेसिक प्रॉपर्टीज फॉर लॉग, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है. log m plus log n, this term is equal to log m into n. सिमिलर अगर माइनस आ जाएगा, log m डिवाइडेड बाय n हो जाएगा.
For minus term, देखो for plus term it is log m into n. For minus term, log m minus log n is log m by n. For log x power n term, this term is n log x. n log x. n shift हो जाएगा front side के ऊपर n log x. And जो required property for next question, a log x to the base. अगर term same हो जाएगी, then answer is x. If we have e log x, कुछ भी बेस मेंशन नहीं है, दैट मींस बेस ई है, सेम टर्म हो जाएगी, आंसर इज एक्स. जो भी बेस डिनोमिनेटर जो नीचे है सेम इन पावर आ जाएगा और टर्म खत्म होके आंसर एक्स हो जाएगा. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज, लॉग प्रॉपर्टी, दिस स्टेप चेक करो. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो यूज करोगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी log x पावर n, log x पावर n इससे इक्वल आएगी प्रॉपर्टी n log x. उल्टा भी लिख पाओगे. If we have n log x, then we use this term as a log. पावर ऊपर शिफ्ट करो x पावर n. By using this term condition, by using this condition, our first step is e log a power x plus e log x power a plus e log a power a. In calculus topic, if base is not mentioned, then we use this term as a e. If base is not mentioned, then we use this term as a e. Normally mention आएगा, normally base mention आएगा. अगर नहीं mention, then we use base e in calculus topic and differentiation and integration. Now, by using this property e log x base e, then answer is x. By using this condition, this term is खत्म हो जाएगी, remaining term की बचेगी y is equal to a raised to power x. Same term खत्म हो जाएगी, remaining term ax raised to power a. And last term a raised to power a खत्म हो जाएगी a. डिफरेंशिएशन करो, एक्सपोनेंशियल टर्म्स a पावर x, डायरेक्टली फॉर्मूला है a पावर x इनटू log a प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n. फर्स्ट फॉर्मूला जिसको डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग टर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज x a x raised to power a minus 1. A raised to power a is constant number and only constant term differentiation is. Therefore, our final answer is this term. This is our final answer. Zero add करोगे same term. This term is our final answer. कोई doubt है students? बहुत basic question है, कोई difficult है. Clear है question? Then now next term, product rule means अगर two functions आ जाएंगे, दोनों functions, not a constant term. If both the terms are functional, if y is equal to u into, अगर दो terms हैं, product rule apply करोगे, dy by dx, u term first term into differentiation of v plus v into differentiation of u into differentiation of v plus v into differentiation of u. बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा. देखो दोबारा लिख रहे हैं, u dy by dx करना, दोबारा रिपीट टर्म लिखो, dy by dx u term into differentiation of v second term plus v into differentiation of u into differentiation of u. Basic question for this term is this. If we have differentiation y is equal to x square into sin x, y is equal to x square into sin x. डिफरेंशिएट करो इस पार्ट. डिफरेंशिएशन किस तरह बने?
dy by dx x square into differentiation of sin x plus sin x into differentiation of x square. sin x into differentiation of x. बेसिक फॉर्मूला याद करो एंड सिंपल क्वेश्चन x square dy by dx इस तरह बनेगी टर्म x square into differentiation of sin x cos plus sin x into differentiation of x square 2 into differentiation of x square 2x. This is the final answer. अगर करना है को x कॉमन कर दो थोड़ा बेटर हो जाएगा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो जाएगा, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है. 2 into sin मतलब फॉर सिंप्लीफिकेशन x कॉमन करके लिख दोगे, कोई डिफरेंस नहीं है, अदरवाइज इट इज अ फाइनल आंसर. क्लियर है टर्म? इस आंसर को भी फाइनल लिख सकते हो, बेटर है कि x कॉमन करो, अदरवाइज ऊपर फाइनल आंसर. नाउ क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अगेन प्रोडक्ट. डिफरेंशिएट these expressions. बेसिक क्वेश्चन है, बाय नॉर्मल मेथड करो. क्वेश्चन मींस y is equal to 5 into 4x square minus 3 plus e raised to power x. डिफरेंशिएशन करो. dy by dx किस देखो बचेगा? फर्स्ट टर्म u 3x minus into differentiation of second term. This is 4x square minus 3 plus e raised to power x plus second term लिखोगे 4x square minus 3 plus e raised to power x into differentiation of first part. First part is 3x minus 5. Clear है students? Now 3x minus 5 into differentiation of this part. Differentiation of 4x. बोलो differentiation of 4x के 8x. Differentiation of constant term. Differentiation of constant term is 0. Differentiation of constant term 0. Differentiation of e raised to power x. Differentiation of e raised to power x is e raised to power x plus 4x square minus 3 plus e raised to power x into differentiation of this term. किस देखकर बनेगी टर्म? 3 differentiation of x1 मतलब 3 बचेगा रिमेनिंग एंड कांस्टेंट टर्म 0. दिस इज योर फाइनल आंसर. बस 0 स्किप कर दो. 3x minus 5 into 8x plus e raised to power x plus 4x square minus 3 plus e raised to power x into 3. This is dy by d, your final answer. करना है थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर दो, अदरवाइज दिस सम इज योर फाइनल आंसर. कोई डाउट? Differentiation of product rule by using product rule, first term same, second term differentiation, then second term same, first term differentiation. Now अगर 3 टर्म्स आ u v w, अगर 3 टर्म्स आ जाएंगी किस तरह डिफरेंशिएशन करोगे? u 2 टर्म्स बाहर करो, u डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड पार्ट. अगेन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म बाहर करो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड पार्ट. दोबारा फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट बाहर करो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म. रिपीट, दोबारा सुन लो. इफ डिफरेंशिएशन ऑफ वन पार्ट करो, अदर 2 पार्ट्स बाहर करो, दैट इज u v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ w. Then UW bahar, differentiation of V second term. Then VW bahar, differentiation of first term, that is U. This is the result. Double time लिखे, easy चीज. Now question based on differentiate x square e raised to power x sin. 3 terms हैं, 3 terms
अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल फॉर 3 टर्म्स। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे फॉर 3 टर्म्स। किस तरह बनेगा प्रोडक्ट रूल फॉर 3 टर्म्स? dy by dx x square e raised to power x into differentiation of sin x. Second term x square sin x into differentiation of e raised to power x plus e raised to power x sin x into differentiation of x square. Clear as students? Now x square ex differentiation of sin x, full differentiation of sin x, this term is cos x plus x square sin x into differentiation of e raised to power x. Differentiation of e raised to power x is e raised to power x plus e raised to power x into sin x into differentiation of x square. Differentiation of x square is 2x. बेटर है कुछ कॉमन कर दो, कॉमन x e x, then this term is your final answer. X square cos x, x square sin x, देखो x ex. अगर ex टर्म क्वेश्चन है, always ex करो. This expression is your final answer. 2x into sin x. This term is your final answer. This term is your final answer. Clear है students? बहुत बेसिक क्वेश्चन. Now क्वेश्चन देखो नेक्स्ट टर्म इज क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल y v मींस अगर डिनोमिनेटर टर्म आ जाए, क्वोशिएंट रूल मींस न्यूमिनेटर फ्रैक्शनल टर्म आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, देन इस पार्ट द डिफरेंशिएशन किस तरह आएगी? डिफरेंशिएशन रूल, डिफरेंशिएशन फार्मूला इज डिनोमिनेटर स्क्वायर denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator. Denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator whole divided by v. Denominator square, denominator first term differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator. दोबारा लिख देना रिजल्ट, सेकेंड टाइम दोबारा देखना अच्छी तरह. इफ वी हैव u by v, dy by dx is equal to denominator square, denominator term square करोगे, denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator. Numerator into differentiation of denominator. Clear है students? Now, question based on quotient rule is like x ex. Possible है by using product rule भी question कर पाओगे, but by using quotient rule question करो. By using quotient rule try करोगे कुछ. dy by dx, dy upon dx. बोलो question. dy by dx. That is denominator square, denominator into differentiation of numerator. Clear है? Denominator square, denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator. Numerator into differentiation of denominator. Now, this term is equal to this term denominator square x into differentiation of e raised to power x. किस देखो आएगा e raised to power x minus e raised to power x into differentiation of x1.
नाउ फ्रॉम न्यूमिनेटर कॉमन किया जाएगा, फ्रॉम न्यूमिनेटर फॉर फाइनल आंसर dy by dx from numerator e raised to power x common, this is x minus 1 upon denominator square. This term is our final answer. Basic question and denominator square. Firstly denominator लिखोगे, differentiation of numerator part, then numerator, differentiation of denominator. Clear है students? Now same question, quotient rule, quotient, same question है 2x plus 3 upon x square minus 5. Y is equal to 2x plus 3 upon x square minus 5. Quotient rule apply करो, y by dx quotient rule. देखो denominator square, now denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of differentiate करो x square, denominator square same thing, x square minus 5 whole square, differentiation करोगे only numerator x square minus 5 into differentiation of numerator part, differentiation of 2x's, differentiation of 2x 2, differentiation of constant term 0 minus 2x plus 3 into differentiation of this part, इससे को आएगी x के differentiation 2x and constant term the differentiation 0, constant term differentiation is 0. Clear है? मल्टीप्लिकेशन करो फाइनल आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन dy by dx को डिनोमिनेटर स्क्वायर सेम थिंग आ जाएगी, डिनोमिनेटर स्क्वायर सेम टर्म, मल्टीप्लिकेशन करोगे न्यूमिनेटर टर्म 2x स्क्वायर minus 10, 5 into 2 10 minus 2 into 2 4x square minus final answer dy by dx is equal to the final answer minus 2x square minus 6x minus 10 all upon x square minus 5. This is our final answer, final term answer this expression. Clear है स्टूडेंट्स? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना. नाउ मेन कंसेप्ट फॉर डिफरेंशिएशन इज चेन रूल. बहुत बेसिक कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दैट मींस डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट. y इज इक्वल टू f into g of x, f into g of x. अगर डिफरेंशिएशन करनी है, फंक्शन अंदर फंक्शन आ जाए मींस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. दीज फंक्शंस आर आल्सो नोन एज कॉम्पोजिट फंक्शंस. किस तरह हो जाएगी डिफरेंशिएशन? dy by dx फर्स्ट टर्म जो बाहर टर्म है f of x इज द डिफरेंशिएशन करोगे इनटू g of x सेम नंबर आ. इंटरनल टर्म एज अ x यूज करोगे, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा. इंटरनल टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ gx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ gx that is equal to g dash. इंटरनल टर्म सेम आ जाएगी इनटू g dash. जो भी बाहर टर्म आएगी, देखो फर्स्ट टर्म f dash x इनटू इंटरनल टर्म सेम आएगी जो भी आएगा g of x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल टर्म g dash. जो भी इंटरनल टर्म आएगी उससे वापस. क्लियर है? क्वेश्चन देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लैरिटी अच्छी आ जाएगी. क्वेश्चन देखो y is equal to sin log x. डिफरेंशिएशन करोगे y is equal to sin log x. स्टेप चेक. फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ sin x करो. डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बोलो. डिफरेंशिएशन ऑफ sin x. What is differentiation of sin x? Cos x. Cos x. Now
in this case x is this part, use करोगे cos x, x is this part, clear है? Now simple x means sin x differentiation is cos x. Now differentiation of its internal part, क्योंकि log x की कोई differentiation नहीं है. Now differentiation of its internal part, differentiation of its internal part, that is differentiation of log x. Now cos log x into differentiation of log x 1 by x upon x. This is our basic. Clear? Firstly differentiation करोगे जो भी first term आएगी, then its internal part, then its internal part. दोबारा देखो, अगर कोई डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्लैरिटी हो जाएगी. y is equal to 10 of sin x है. फर्स्ट टर्म किस पार्ट दी डिफरेंशिएशन आएगी? फर्स्टली डिफरेंशिएशन करोगे 10 sin सेम टर्म, देन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x. चेक करो, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज secant square x, secant square x. Now x की है sin x, means internal term consider as a x, but x नहीं है, this is sin x. Now differentiation of its internal part, differentiation of its internal part is sin x. किस देखो, this is secant square sin x into differentiation of sin x is cos x. Sin x is equal to cos x. This term is your final answer. Differentiation of sin x is cos x. Clear as students? Now, same question. If we have y is equal to cos of x square plus 3x plus 1, y is equal to cos of x square plus 3x plus 1. Differentiation of cos x, differentiation of cos, बोलो first. Differentiation of cos part, cos term differentiation is minus sin x, x square plus 3x plus 1. Now differentiation of internal part, differentiation of its internal part, because it is a differentiation of cos x is sin x is the same term, x is the same term. Now differentiation of same internal part, differentiation of its internal part, this is x square plus sin x plus 1. Differentiation of internal part, that is x square plus 3x plus 1. Sorry, this is minus sin of x square plus 3x plus 1 into differentiation of x square, बोलो differentiation of x square, 2x, differentiation of 3x is differentiation of x square 2x, differentiation of 3x is 3. This term is your final answer. dy by dx final answer हो जाएगा minus sin x square plus 3x plus 1 into 2x plus 3. कुछ क्लियर है? फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन, देन इंटरनल टर्म सेम आ जाएगी, देन इंटरनल टर्म डिफरेंशिएशन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन. y is equal to sin, this term is x cube, internal term is x cube, sin x cube dy by dx. It means differentiation of sin is differentiation of sin x, x is the same term x, into differentiation of internal part, that is x cube. Now cube into differentiation of x cube is 3x. 3x square. This term is your final answer. Means 3x square cos x cube is your final answer. Now difference check करो between this term sin x cube. X cube means angle is internal term. Sin x cube means, if question is like that, sin x whole cube, sin x cube,
sin cube x. Difference check karo, it is sin x cube. It is only angle cube, only angle cube. But this term means it is a sin x whole. It is a whole term power. This term is whole term power. Now firstly use karo x power n. X power n formula use karo. Firstly use करो पावर फॉर्मूला, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n. x पावर n फॉर्मूला यूज करोगे, दिस टर्म इज 3 sin x raised to power sin x raised to power 2 into differentiation of sin x into differentiation of sin x, that is equal to cos x. Differentiation of sin x is cos x. क्लियर है? In this case, firstly, power differentiation solve हो जाएगी 3 sin x के into differentiation of sin x, that is equal to cos x. This is whole power and this term is angle term. Difference देखना बेटा. Now question देखो next. Cos cube x, same question. Cos cube x, it means angle है, power angle है? No. Complete power है. This is whole power 3. Whole power 3. Now differentiate करो. dy by dx. Differentiate करो बेटा. Firstly power n solve करो. X power n differentiation means differentiation of x power n. nx n minus 1 solve करो. nx minus n minus 1. This is 3 cos x raised to power 3 minus 1. Now differentiation of its internal term. Differentiation of its internal part. Differentiation of its internal part, that is differentiation of cos x, is cos square x whole square है ना, this is cos square x into differentiation of cos x is minus sin x. This is your final answer, or we write this term as a dy by dx is equal to minus 3 sin x into cos square. This term is your final answer. Clear as students? Now, same question, differentiation of tan root x. Differentiation of tan root x. Step check करोगे. Differentiation of tan root x means differentiation of tan x. Differentiation of tan x. बोलो differentiation of tan x. Tan x differentiation is secant square x, here x is root x, secant square root x into differentiation of this internal part, differentiation of root x. याद होगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद करूं, differentiation of root x, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करके secant square root x into differentiation of root x is 1 by 2 root x. Clear है students? Now this term is your final answer. Means final answer है dy by dx. It is secant square root x upon 2. This term is your final answer. Clear है term? कोई doubt? Whole power 5. Same question like sin cube cos cube वाला question है. Y is equal to 2x cube whole power 5. 2x cube whole power 5 है. Differentiate करोगे. Firstly power 5 solve करो. Power 5. This term is dy by dx 5. 2x plus 3 raised to power 2x plus 3 raised to power 4. Solve हो गया ना x power n. Now differentiation of this internal part, 2x plus 3 differentiation of this internal part, that is 2x plus 3. बोलो देखो टर्म बचेगी 5, 2x plus 3 raised to power 4 into differentiation of 2x. Differentiation of 2x is 2 and differentiation of 3 constant term is 0. Differentiation of constant term is 0. Now 5 into 2 is 10. 2x plus 3 raised to power 4. This term is your final answer. Final answer. Clear है बच्चों?
डिफरेंशिएशन ऑफ रूट टर्म, देखो डबल मेथड है. फर्स्ट मेथड, either we use this term root as a power with 1/2. पॉसिबल है कि पावर तो देन और सेकंड मेथड एंड बेटर मेथड, पावर 1/2 लिख के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बट बेटर मेथड है फर्स्ट स्टेप, इन फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स अप्लाई करो, दैट इज 1/2 रूट एक्स. इन फर्स्ट स्टेप अप्लाई करो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, दैट इज 1/2 रूट एक्स. नाउ dy by dx is equal to 1/2 root x, that is ax square plus 2bx plus c. This is the formula for root x, direct differentiation. Now differentiation of internal part. Differentiation of internal part, that is 2x square plus 2bx plus c. Now ax square, differentiation of ax square is, sorry, differentiation of internal part, root नहीं आएगा ऊपर, that is ax square plus 2bx plus c. Now differentiation करो, फर्स्ट टर्म सेम आएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड पार्ट करोगे, दिस इज 2ax plus 2b प्लस कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन इज 0. कॉमन आ जाएगा 2, कॉमन हो जाएगा 2, 2 कॉमन करोगे, देखो 2 कॉमन आ जाएगा फ्रॉम न्यूमरेटर टर्म, 1/2 अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू 2 कॉमन, दैट इज ax प्लस b. 2 कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल आंसर ax प्लस b अपॉन डिनोमिनेटर. दिस टर्म इज योर फाइनल आंसर. मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट. फर्स्टली रूट एक्स डिफरेंशिएशन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स इंटरनल टर्म. क्लियर है टर्म? क्वेश्चन देखो जरा नेक्स्ट. सेम क्वेश्चन, थोड़ा नंबर चेंज करके बोल रहे हैं. इफ वी हैव y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स into 1/2 root x into differentiation of sin x. बोलो differentiation of sin x किस देखो आएगा, differentiation of sin x cos x upon 2 root sin x, cos x upon 2 root sin. Clear है स्टूडेंट्स? फर्स्टली रूट डिफरेंशिएशन 1/2 root sin x into differentiation of internal part, that is equal to sin x differentiation, that is cos x. कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नो. अगर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह बनेगी टर्म? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x. बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x, 1 upon under root of 1 minus x, 1 upon under root of 1 minus x. Differentiation of cos inverse x minus 1 upon under root of 1 minus x. देखो सेम टर्म बट नेगेटिव आंसर हो जाएगा. सेम कंसेप्ट, cos आ जाएगा, c आ जाएगा, c आ जाएगा, c आ जाएगा, आंसर नेगेटिव हो जाएगा. फॉर c आंसर नेगेटिव. देखो किस तरह, differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Differentiation of cot inverse x, same answer but with negative symbol. Same answer with negative symbol. Similarly, differentiation of secant inverse x. Secant inverse x differentiation is 1 by mod of x under root of x square minus 1. Same differentiation of cosecant inverse x minus 1 upon mod of x under root of x square minus 1. क्लियर है? देखो जो भी नंबर आएगा इन केस ऑफ साइन एंड कॉस सेम है बट सी है देन नेगेटिव, टेन एंड कॉट सेम है, कॉट है सी है दैट मींस नेगेटिव, सीकेंड एंड कोसेकेंड सेम है बट सी है देन इट इज अ नेगेटिव टर्म. क्लियर है टर्म? नाउ इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन. कोई डाउट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टर्म्स, राइट. इफ वी y is equal to
sin inverse 2x. Sin inverse 2x. Differentiation of sin inverse x. बोलो formula for sin inverse x. Simple formula, differentiation of sin inverse x is 1 upon under root of 1 minus x square. But इस step के अंदर x प्लेस ऊपर की है 2x. That is 1 upon under root of 1 minus x square. That is 2x square. Into differentiation of 2x. बोलो differentiation of 2x is 2. Differentiation of 2x means differentiation of internal part. दोबारा पूरा लिख के करो. Differentiation of 2x, that is equal to 2. Now final answer बचेगा 1 upon under root of 1 minus 4x square into differentiation of 2x is 2. Final answer is this. कोई मुश्किल नहीं. Same concept, chain rule use हो जाएगा, but by using inverse arithmetical formulas. Clear है? Now same question check करोगे बच्चे. Y is equal to cos inverse of cot x. Y is equal to cos inverse of cot x. Formula check करो बच्चों. Y is equal to cos inverse x. मतलब differentiation of cos inverse x. बोलो बच्चों. Differentiation of cos inverse x minus 1 upon under root of 1 minus x square. But in this case x is cot. मतलब other term है cot x. Now its differentiation is 1 minus 1 upon under root of 1 minus x square. This is cot x whole square. Into differentiation of this internal part. That means differentiation of cot x. Differentiation of internal part. That is differentiation of cot x. बोलो differentiation of cot x. Normally formula याद करना. Minus differentiation of cot x is minus cosecant square x whole divided by 1 minus cot square x. This is minus into minus plus हो जाएगा. This is cosecant square x whole divided by under root of 1 minus cot. Final. No doubt? Clear है students? Same basic question. One more question. देखो इसके अंदर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. 3 टर्म्स की डिफरेंशिएशन आएगी. डिफरेंशिएशन चेक करना. y e firstly exponential term differentiation, then tan inverse differentiation, then root x differentiation. देखो किस किस टर्म की डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड है. Firstly required है differentiation of e raised to power x, that is equal to e raised to power x. Second differentiation required है tan inverse x, that is 1 upon 1 plus x square. Third differentiation required है differentiation of root x, that is equal to 1 by. Actually देखो differentiation of 3 terms required है. First term dy by dx, e raised to power x differentiation is e raised to power x. Then differentiation of tan inverse root x. Then differentiation of root x, internal term भी आ जाएगी. Differentiation of root x. बोलो differentiation. First one differentiation of e raised to power x, same चीज e raised to power x. Now differentiation of tan inverse x. Differentiation of tan inverse x. 1 upon 1 plus x. 1 upon 1 plus x. X is root x. 1 upon 1 plus x. Already लिख चुके हो differentiation of root x. That means differentiation of root x is 1 by 2. This term is your final answer. This term is your final answer. देखो की है. Firstly differentiation e raised to power x. Then internal term is tan inverse root x. Then differentiation of tan inverse. Then its internal part is root x. Differentiation of root x. E raised to power x same है. Differentiation of tan inverse 1 upon 1 plus x square. That is value of x square is root x square. Into differentiation of root x 1 by root x. Now its final term is e raised to power tan inverse x whole divided by 2 root x same आ जाएगा into bracket 1 plus x. Root x square is 1 plus x.
दिस टर्म इज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? दीज आर बेसिक फॉर डिफरेंशिएशन। कुछ बेसिक टॉपिक सिखाए मैं फॉर डिफरेंशिएशन। इन नेक्स्ट क्लास में फर्दर इन वीडियो 2 तो सेकंड वीडियो आएगी, उसके अंदर डिफरेंशिएशन दे नेक्स्ट कांसेप्ट टीच करांगे। मिलते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।